ये बने में निकल जाऊं बने में तेरा मेरा न्यावे होएगा सते संगे में बदे में जावा तो राधेश में डरे घर लागे बचा फिरा तो हारो कोले जावे. In the last 2 decades, the economic landscape of India has been constantly changing. This has led to the prosperity of some classes and sections, but much of the population has been left out in this process. These are the workers of the unorganized sector who continue to be economically insecure and unable to participate adequately in the process of economic growth. Although there are many welfare schemes that exist, they fail to reach the intended population due to lack of effective delivery systems. This was one of the reasons which led to the birth of Self-Employed Women's Association, SEWA. SEWA is a binding force for almost 2 million women workers in the informal economy of India. As a national trade union, SEWA works to organize and empower its members by articulating their interests and voicing their concerns regarding public policy at the national and state level. In India, there are a lot of government schemes, and the government spends billions of rupees every year in order to reach schemes to the poor, to informal people, for growth, for social security. However, much of that money actually does not reach. Poor women do need social security, and the government does have the money. Is there not an easier way of reaching all that billions of rupees to women, to poor people, to the informal economy people? And one of the ways that has been recently discussed in India is that of cash transfers. So we ran this pilot, and I must say we were very amazed at the results, and we were also amazed at the enthusiasm of people who were part of this pilot. In 2011, SEWA in partnership with UNICEF launched the Basic Income Pilot Experiment in 9 villages of Madhya Pradesh. The basic income payments were made up to 18 months to study their viability as a tool of social security for the poor. इसका प्रयोग मतलब शुरू किया हमने, उसको इम्प्लीमेंट किया, इसको बहुत अच्छे से क्योंकि डिज़ाइन किया गया था, बच्चों को भी पैसे दिए गए, यूनिवर्सल रखा। ऐसे गांव चुने जहां पर कि 100 परिवार हो, परिवार के प्रत्येक सदस्य को पैसा दिया गया। इस योजना के तहत 1 साल तक हर परिवार को कुछ नगद पैसे दिए जाएंगे। परिवार में जो वयस्क है 18 साल से ऊपर जो है उनको 200 रुपए मिलेंगे, 18 साल तक जो बच्चे हैं उनको 100 रुपए मिलेंगे। और ये पैसा जो है आपके बैंक के खाते में जाएगा, लेकिन बैंक का खाता खोलना पड़ेगा। इसीलिए 2 महीने तक आपको हाथों हाथ नगद दिया जाएगा। भाइयों के जो 200 रुपए भाई को मिलेंगे, बहन का 200 रुपए बहन को मिलेंगे, और बच्चों का जो है वो बहन के खाते में जाएंगे। आपको बराबर हर महीना 200 रुपए आपके खाते में आ जाएगा, कोई शर्त नहीं है। आपको परिवार में आपको ही तय करना है। In order to facilitate these payments, the project staff mediated with bank officials and helped all the villagers to open bank accounts. Within months, all the 6,041 recipients were receiving basic income payments in their bank accounts. Thereafter, to assess the impact of basic income payments and track its progress on about 1,100 households, the baseline survey, interim evaluation survey, final evaluation survey, and a post-final evaluation survey were carried out over a period of 18 months. The results revealed a range of optimistic outcomes, indicating the positive impact of this experiment. The basic income is transformative. And what we mean by that is that it has 3 overwhelming effects that are beyond all the individual specific outcomes. The first effect
is that it has improved the capabilities, the potential of people in terms of schooling, nutrition, health, and so on. That's a very important set of issues, sometimes called welfare. But it's also important because it has an economic growth effect. It is developmental in the sense of stimulating the local economy, and the local multiplier effects of the outcomes are very important. The third aspect, which has been given very little attention in the cash transfer literature and even in the basic income literature, is that the basic income, even when it's very small, has an emancipatory effect. It is liberating people. बच्चों को स्कूल के टाइम में कोई पैसे की ज़रूरत पड़ती, काफ़ी किताब तो उसके पापा के पास नहीं होते, तो वो पैसे जो मेरे पास रखे थे गुप्त में, वो निकाल के उसको काफ़ी पेन दिला देती। कभी कहीं तबीयत ख़राब हो गई तो उस पर भी खर्च किया। जो बच्चे बकरी चराने या पशु चराने और अपना खेती में कार्य करने जा रहे थे, वो अब नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं। The most visible impact was in the field of education, with increase of expenditure in paying school fees, purchase of shoes, books and private tuition. साल होता जूता भी सीरिया, हाँ, या जैकेट भी लायो, देखो तेल भी लायो, कपड़ा भी लायो। उसका ऐसे सोयाबीन में कोई मजदूर करे, दवाई छिटने में उसको दिए। अच्छा, पहले के पैसे का क्या करा आपने? या लेटरिन वाले बच्चों या बने का कदे अभी के साल में मिले भले। जैसे हमने पैसे मिले तो उसका हमने मकान बनाया, वो मकान अच्छे से बनाया हमने, ज़्यादा कर्जा वर्जा नहीं लिया कुछ भी किसी से। उसके बाद हमने लड़की की शादी करी, उसमें भी कोई से ब्याज या पैसा नहीं लिया। ये बच्ची थी तो इसका ये गर्भवती थी मैं, तो फिर इलाज करवाने जाती थी मैं अस्पताल, उसमें लग जाते थे। सुविधा गरीब लोग जैसे कभी कोई बीमार दुखी हो गया, अचानक कुछ हो गया तो अपने पास ये पैसा मिला, पड़ा रिया तो अपन लगा तो दे, कोई भी बीमार दुखी हो जाए तो। In basic income villages, the overall illness rate was much lower as compared to control villages. तो ये पैसा तो हमने खान पीन पे खर्च किए, तेल वगैरह अच्छे से मिल जाता, दाल वगैरह भी अच्छे से मिल जाती है, हरी सब्जी ले आते थोड़ी बहुत, किलो 2 किलो दाल इकट्ठी खरीद के ले आते हैं, तेल इकट्ठा मिल जाता है हमको, 2-3 किलो तेल इकट्ठा ले आते हैं, 4-5 किलो शक्कर इकट्ठी ले आते हैं। अभी होली आई थी तब बच्चों के कपड़े खरीद के नहीं लाए हैं, अब लाएंगे। कपड़ा लता भी लिया वहाँ, में तेल साबुन भी लिया वहाँ, और खाना पीना को सुधारो ही मत छो, अच्छी सुविधा मिले रही। मतलब यूँ महीना भर मैं यूँ 1-2 बार ना होता था, यूँ हफ्ता में मतलब 4 बार ना ही रहा हम, यो सुधारो यो सर अच्छो मतलब। Initially, the Z scores indicating the level of malnutrition among children were as low as 34 among the girls. After 1 year of basic income, this score moved closer to 61, inching closer to a normal curve for girls in the basic income villages. जब से अभी जो पैसे मिलने लगे ना, जब से बहुत बदलाव हो कि कोई न तो गाय ले ली, कोई न बकरी ली, कोई न टीवी ली है, कोई न पंखा लिया है, कोई ने तो बच्चे की पढ़ाई में डाल दिया है, कोई ने कि जमा कर लिया है पैसे बैंक में डाल दिया है, तो बहुत बदलाव हो गया। मैं पहले शुरू में मैंने 1 जानवर लिया था, एक का मैंने 40 जानवर कर लिया। और हता बचत का हता हमने 2 बैल ले लिया, 1 बकरी ले ली, और बच्चा बच्चे उनका पढ़ाई भी करी। और हमने कहीं करियो कि जो हमें छोटो मोटो कर्जो थो वो कर्जो दे दियो, जिका बाद में सेवाड़ी से यो भी करियो हम नहीं 100 रुपया बचत भी करी। पानी रुक गया तो हमने सोचा कि कुछ उपयोग करा है तालाब पानी से, तो हमने 12 जना ने समिति बनाई, पैसा इकट्ठा किए, तो इसकी हम मछली का बच्चा लाया, तो 24,000 में लाया हम 1,09,000 बच्चा। तब ये तालाब पानी में है, अभी तो गर्मी में निकाल आएंगे, करीब 1 लाख 1.5 लाख का बच्चा बिक जाएगा हमारा। ये जो पैसा मिल रहा है उसी पैसे से खरीदी आपने? हाँ। तो ये आपके अकेले के पैसे की है कि सबके मिला के पैसे है? सबका ही मिला। Economic growth was most visible in the tribal villages, especially among women. Most of them used to earn their living from labor work, but 66% began farming their own land by the end of basic income, as compared to only 33% in controlled villages.
पहले ऐसा नहीं होता था, किसी से बात नहीं करने देते थे कि अरे कजे कहाँ का आया वो तो कहाँ जाए वहाँ। अच्छा। हाँ पहले नहीं बोलते थे, फिर न्यू कर को हम घर में भर आ जाती थी, हम नहीं बोलते थे आदमी के सामने। अब हमारा आदमी नहीं बोलते ऐसे कि कहाँ जाए कहाँ नहीं, जा तेरे को बुलाए सेवा वाला आया अपना। पहले खूब पीते थे लोग शराब, हाँ अब नहीं पीते, अब बहुत उन्होंने छोड़ दी। 20 रुपया बोतल मिलती दारू, अब 20 रुपया बचेगा तो 20 रुपया का कभी सामान ले आएंगे, नमक है मिर्ची कुछ भी ले आएंगे, तो घर में न शराब को क्या पी लेगा, न घर में उल्टा झगड़ा करेगा। जैसे किसी से अपन पैसे मांगने जाओ या कोई किसी को ये बनाओ कि नहीं तुम मेरे को पैसे दो, फिर वो भी आज ले 3 का 4 का, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। गुलामी जैसा काम नहीं होएगा, गुलामी जैसा काम नहीं होएगा। पहले क्या गुलामी करते थे लोगों की, अब नहीं करना पड़ते। पहले क्या वो बड़े बड़े लोगों से पैसे लेना था, किसी के पास जमीन है तो के पटेल वहाँ पैसे चाहिए कि आज 10,000 आ जाना ले जाना, 10 का ब्याज लगेगा, देंगे, देना पड़ता है। और वो देने से क्या होता है कि आज की तारीख बता दी अपन, वही तारीख को पैसे चुका दो तो ठीक है, नहीं तो कोई घर में से सामान निकाल जाएंगे, नहीं तो फिर अपन को रकम बेच को देना पड़ता है। ऐसा करना वो नहीं हो रहा, अब ऐसे नहीं कर रहे हैं। अपना कन पैसा नहीं रहने किसी के हाथ जोड़ने जाए तो बहुत बुरा लगता है कि वो कभी उठा के कह दे कि नहीं मेरे पास में, तो मुँह लटका घर आ जा, न वो रहे अपने पास में, तो कोई डर वाली बात तो नहीं रहनी। बहुत बड़ी मदद हुई, मदद ये हुई कि हमको पैसा मिलता गया तो लोगों से लेके नहीं आए सर, हम उधार नहीं लाए, लोगों की मेहनत नहीं करी, नहीं तो हमारा महीना भर काम करिए 200 रुपये ले जा, महीना भर उनका गोबर सोरो, उनकी दाढ़ की करो, ये नहीं करा सर हमने। ये बहुत अच्छा हुआ हमारे संग। तो ये कैसा लगा ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा पैसे का वितरण हुआ, अच्छा लगा, हमें तो बहुत बढ़िया लगा सर, और तुम लोग आओ तो हमें बहुत अच्छा लगे। Although the results of this pilot study have been promising, the question now is, where do we go from here? As this study has shown, by linking the poor, rural and tribal communities to the mainstream via the banking system and trusting them to make their own financial and welfare decisions, their lives can be transformed drastically. If one move can make such a difference, one can only imagine what a nationwide movement will result in.